सो हेलो गाइस, वेलकम बैक। तो हमने जो पहले वीडियो में पढ़ा था वो था कॉम्प्लेक्स नंबर सिस्टम, जो कि प्रिंसिपल आर्गूमेंट, मॉड्यूलस, जनरल आर्गूमेंट, प्रिंसिपल ऑफ लॉगरिथमिक फंक्शन, ये सब हमने पढ़ा था। तो कॉम्प्लेक्स नंबर सिस्टम्स, मॉड्यूलस और आर्गूमेंट से अगर कुछ क्वेश्चन आता है या फिर आएगा तो हम उसे कैसे सॉल्व करना है, तो आज उसके इस वीडियो में हम इसको सॉल्व करेंगे। सो टुडे वी विल सॉल्व दिस प्रॉब्लम्स। ये जो प्रॉब्लम है ये एग्ज़ाम में आ सकते हैं या फिर कुछ एक क्वेश्चन हैं जो कि आ गया है, जो कि आ चुका है, तो उसे हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे। तो चलिए इसका वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है यहाँ पे, इफ z इक्वल टू 1/x प्लस आई वाई, देन व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ रियल पार्ट ऑफ z बार। सो इसे हम कैसे सॉल्व करेंगे, चलिए। सो देखिए यहाँ पे दिया हुआ है z इज इक्वल टू 1/x प्लस आई वाई। नाउ इसे हम क्या करेंगे, x माइनस आई वाई से इसे हम मल्टीप्लाई करेंगे। सो x प्लस आई वाई, x माइनस आई वाई, देन हमें क्या मिलेगा, हमें मिल सकता है यहाँ पे जो कि x माइनस आई वाई, ये जो है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। सो ये हम देगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सो ए स्क्वायर माइनस आई वाई स्क्वायर। सो ये जो है ये हमें देगा x माइनस आई वाई बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। क्योंकि यहाँ पे जो आई स्क्वायर का वैल्यू -1 है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। सो दिस, तो अब यहाँ पे हमें क्या मिला, हमें मिला z इज इक्वल टू एक्स बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस आई टू वाई बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। सो हमें ये जो है ये रियल पार्ट और ये इमेजिनरी पार्ट। नाउ z बार, व्हाट इज द z बार इज x बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो अगर यहाँ पे प्लस होता हमें क्या पता है, ओके पहले हम ये लिख देते हैं, उसके बाद हम बताते हैं। तो ये यहाँ पे ये हो जाएगा आई वाई बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो हमें क्या पता है, हमें पता है अगर z इज इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई है तो z बार मिलेगा हमें x माइनस आई वाई। तो सिमिलरली अगर हमें z इज इक्वल टू एक्स माइनस आई वाई है तो हमें z बार देगा x प्लस आई वाई। तो z बार अगर x माइनस आई वाई है, z इक्वल टू एक्स माइनस आई वाई है, सो हमें z बार मिलेगा x प्लस आई वाई। सो यहाँ पे मुझे z है यहाँ पे x बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस आई एंड वाई बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। सो हमें z बार ऑब्वियस मिलेगा यहाँ पे x बाई दिस एंड प्लस आई बाई दिस। सो यहाँ पे क्वेश्चन में क्या पूछा है, रियल पार्ट ऑफ z बार। सो रियल पार्ट ऑफ z बार विल बी x बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ये जो है ये सब इजी क्वेश्चन है। तो हमारे पास दूसरा क्वेश्चन जो है उसे हम सॉल्व कर लेते हैं। चलिए, पे गिवन है मॉड ऑफ z माइनस 3 इज इक्वल टू 5। नाउ हमें क्या लिखना है यहाँ पे अगर हमें पता है z इज इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई, एक्स प्लस आई वाई इज -3, दिस मॉड इज इक्वल टू 5। सो अगर हमें पता है z इज इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई है, तो उसे हम लिख सकते हैं यहाँ पे x प्लस आई वाई -3। तब यहाँ से क्या करेंगे, हमें यहाँ से रियल पार्ट जो है वो अलग करना पड़ेगा और इमेजिनरी पार्ट वो अलग। तो यहाँ पे रियल पार्ट क्या क्या है, x एंड -3। सो x -3 ये हो गया रियल पार्ट प्लस आई ऑफ वाई, दिस इज इक्वल टू 5। नाउ द मॉड ऑफ x प्लस आई वाई वो हमें पता है जो रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। सो यहाँ पे रियल पार्ट है x -3 इट्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये 5 दिया हुआ है। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, सिंस मॉड z इज इक्वल टू रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एज z इज इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई। इसका मतलब है अगर z हमें x प्लस आई वाई दिया हुआ है तो हमें मॉड z हम लिख सकते हैं यहाँ पे रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। नाउ
अब यहाँ पे जो है रूट है और यहाँ पे कुछ नहीं है, तो हम इसको स्क्वायर कर सकते हैं, बोथ साइड में हम स्क्वायर करेंगे। सो उससे हमें क्या मिलेगा, दिस प्लस वाई स्क्वायर दिस इज इक्वल टू 25, दैट इज। सो इसे हम कैसे लिख सकते हैं, इसे हम लिख सकते हैं x माइनस ए इट्स स्क्वायर प्लस वाई माइनस 0 इट्स स्क्वायर, दिस इज आर स्क्वायर। तो ये किसका इक्वेशन है, ये एक सर्कल का इक्वेशन है। तो ये क्या रिप्रेजेंट करता है, ये एक रिप्रेजेंट करता है सर्कल जिसका रेडियस कितना है 5 स्क्वायर। सो 5 इसका है रेडियस और इसका सेंटर कितना है 3 0। तो इसे हम काट देते हैं, ये इक्वेशन ऑफ सर्कल, इसे हम लिख देते हैं इक्वेशन ऑफ ए सर्कल। तो अगर इसके साथ हम कंपेयर करेंगे तो हमें ये मिलता है। और इसका सेंटर जो है, सेंटर हम लिख देते हैं यहाँ पे सेंटर -3,0 एंड रेडियस इज 5। सो इस चार में से हमें जो है ऑप्शन सी इज करेक्ट। दिस रिप्रेजेंट ए सर्कल और दिस द लोकस ऑफ सर्कल। Now another question is, so there are another question is, if alpha is a real number and that is z is given by this, then find the mod z। तो हमें z दिया गया हुआ है, तो हमें z दिया हुआ है, हमें mod z का वैल्यू जो है फाइंड करना है। तो चलिए so given, what is given is z is equal to 1 minus cos alpha plus I sin alpha, where alpha is the real number. Now this is the real part and this is imaginary part. So mod z is mod of 1 minus cos alpha plus I of sin alpha. Now we know that if z is equal to x plus iy, then यहाँ पर लिख देता हूँ if z equal to x plus iy, then mod z is root over x square plus y square, that is this is the real part and this is the imaginary part. So यहाँ पर लिख देता हूँ this is real part and this is imaginary part. Okay, so this is the real part and this is imaginary part. So here this will be root over 1 minus cos alpha its whole square plus sin alpha its whole square. Now what is that? Now here we write this is a minus b whole square formula. So it will be 1, that is a square, that is 1 square is 1, minus 2, this is 1 a 2ab, so 2ab plus b square means cos square alpha, plus sin alpha is whole square means sin square alpha. So this will be 1 minus 2 cos alpha and sin square, this is cos square plus sin square alpha. We know that this is equal to 1, or this is sin square theta plus cos square theta is equal to 1, where theta is real. Here alpha is also real, so sin square alpha plus cos square alpha is equal to 1. So this will be 1 plus 1 is equal to 2 minus 2 cos alpha. Here 2 will be common, then 1 minus cos alpha. So what will be this? This is 2 into 1 minus cos alpha, that is 1 minus cos theta. Its formula will be 2 sin square alpha by 2. Since what? 2 sin square theta by 2 is equal to 1 minus cos theta.
or 2 sin square theta is equal to 1 minus cos 2 theta, but here is alpha, so will form is alpha by 2. So this will be 2 2, that is 1 2 will be outside, and this is sin square alpha by 2, so it will be sin alpha by 2. So this is the value of mod z. So if z is equal to this, then mod z is equal to this. And also some question are there. So here some questions for concept check. Okay, and that is there are one question is if z is equal to z bar, then which of the following is true? Which of the following is true? What is that? Option A, z is equal to 0. Option B is z is purely imaginary. Option C, z is purely real. And option D, none of the above. Okay, so the question is if z is equal to z bar, then which of the is following is true? So solution, what is that? This question is for only her concept. So z is equal to z bar, we know that z is equal to x plus iy, then z bar is equal to x minus iy, जो कि हमने पिछले वीडियो में पढ़ा है z bar कैसे ये आता है. Okay, so now z is equal to z bar, so this is equal to, so x plus I is equal to x minus iy. So comparing we have comparing we have what we have, this x will be cancelled, so this iy is equal to minus iy. So what will that this, so 2iy is equal to 0. So I is never 0, 2 is never 0, so implies that y is 0. So if y is 0, then z will be x plus 0. So x is only real part. So if z is equal to z bar, this holds only when z is a purely real. So option C will be correct. Do you understand all? So if z is equal to z bar, only when if z is purely real, because here we have y is equal to 0, and if z is equal to x plus iy, then y is 0, so this imaginary part will be 0, so this only purely real. सो दिस क्वेश्चन, सो ये क्वेश्चन जो है ये नेट में आ चुका है. तो चलिए, ये शायद 2012 में आया था. तो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन पूछा गया था कि दिस नंबर, एक नंबर दिया था जो कि e टू द पावर, सो क्वेश्चन था √2 e टू द पावर i पाई. ये जो नंबर है ये क्या है? ऑप्शन ए इज रैशनल नंबर, ऑप्शन बी इरेशनल नंबर, ऑप्शन सी इज इमेजिनरी नंबर,
or option D, none of the above, that is none of the above. So this number is what is that? So ये जून 2012 में आया था. चलिए इसको सॉल्व करते हैं. सॉल्यूशन इज दिस √2 e to the power I pi. So we know that, so this is √2 and e to the power I pi can be written as cos pi plus I sin pi. Since क्यों e to the power ix, we know that cos x plus I sin x. So now this is √2 and the value of cos pi, what is that? This is -1 and the value of sin pi it will be 0. So this is √2 into -1, this will be 0, so this will be -√2. So what is that? We know that the √2 is an irrational number, so option B will be correct. सो एक और क्वेश्चन है जो कि 2022 में इस सितंबर से एग्ज़ाम हुआ था. जो सितंबर में एग्ज़ाम हुआ उसमें मॉडुलस से एक क्वेश्चन आया था. क्या था वो क्वेश्चन था, इफ़ e to the power of e to the power z, this modulus value is equal to 1, then what is the value? Then this ऑप्शन ए. ऑप्शन तो बराबर पता नहीं है मुझे, लेकिन उसमें x एंड y का जो है वो वैल्यू दिया हुआ था. तो हम ओके x एंड y का वैल्यू जो है वो हम यहाँ से डिटरमाइन करते हैं. तो चलिए, तो यहाँ पे द गिवन mod of e to the power z is equal to 1, and we always know that z equal to x plus iy. So e to the power of e to the power x plus iy, this modulus it is equal to 1. Then इसी पेज में कर लेता हूँ थोड़ा सा. सो हमें पता है e to the power x plus iy is equal to 1. So this implies that e to the power of, this is e to the power x into, that is e to the power x dot e to the power y. So हम क्या करते हैं, यहाँ पे जो वैल्यू ऑफ e to the power y वो यहाँ पे लिख देते हैं. तो चलिए, e to the power I theta means cos y plus I sin y. So this is equal to 1 again. So e to the power of e to the power cos y, this is multiply with e to the power x plus, और इसे हम प्लस में लिखते हैं, इसको हम ओके लिख देते हैं प्लस I e to the power x sin y is equal to 1 again. What is that? This is equal to e to the power x cos y dot e to the power I of e to the power x sin y, this is equal to 1. So now what is that? We know that here e to the power x, e to the power of e to the power x cos y, this dot this, the property of modulus. We have if mod of z1 into, this is the property mod on z1 z2, this will be mod z1 mod z2. This is the property of modulus. So e to the power I e to the power x sin y, so this is equal to 1. So this will be e to the power x cos y, this is equal to 1. Since e to the power I of this
this will be 1. What is that? Since e to the power I theta, this mod is equal to 1. Why it is 1? If we expand this, then we have cos theta plus I sin theta, then mod of cos theta plus I sin theta will be cos square theta plus sin square theta, so that will be 1. So here this is equal to 1 only when if this is equal to 0, since we know that e to the power 0 is equal to 1. So this is only when this is equal to e to the power x cos y, this is equal to 0, then this relation will be satisfied. So now e to the power x will never 0, because the graph of e to the power x, we always know that this is 0 to 1, so this will never 0. So we have cos y is equal to 0. So cos y is 0 means this only when this is equal to cos, sorry, here, so y will be 2n plus 1 pi by 2. So only when if cos pi by 2 is 0, cos 3 pi by 2 is 0, that is odd multiple of pi by 2. So here y will be this. So here the value of x is not defined, so here so only when one value of y will be calculated. So ये था ऑप्शन में जो कि y का वैल्यू ये था, तो आप लोगों को जो है वो 4 में से ये ऑप्शन आपको क्लिक कर लेना होगा। तो वो 2022 में जो आया था उसमें ये आंसर ठीक था। तो मॉड्यूलस 2022 आया है, तो शायद दिसंबर में अगर नेट होता है तो उसमें भी आ सकता है। तो ये जो है ये हमने मॉड्यूलस का क्वेश्चन कर लिया। अब हम जो है कुछ आर्गूमेंट के क्वेश्चन करेंगे सॉल्व। क्वेश्चन इज z इज इक्वल टू -2 बाई 1 प्लस I into root over 3, then the argument of z, what will be that? Option A is pi by 2, option B is 2 pi by 3, option C is pi by 3, and option D, this is 7 pi by 6. So now, so solution is, so here given, what is given is z is equal to -2 by 1 plus I root 3. So then we will multiply in upper and lower, that is -2 into 1 minus I root 3 by 1 plus I root 3 into 1 minus I root 3. So -2 this, now 1 minus I root 3, and here this will be a plus b into a minus b, that is a square minus b square. So 1 plus 3, that is 4. So this will be 4 minus of 1 minus I root 3 by 2. So this will be I root 3 minus 1 by 2. So here real part is -half plus imaginary part is root 3 by 2. Now we know that the argument of z is, that is argument of z, this will be tan inverse of mod, that is y by x. So this will be tan inverse y means root 3 by 2, and x is -half. So this is mod here, so tan inverse, this 2 to cancel, so this will be root 3. So tan inverse root 3, we know that this is pi by 3. So here this is the argument of z is pi by 3. So which option will be true? This is option C. So this is the argument of z. So here another question is, that is question number 2, and this given, that is if z is equal to the power 2 plus I into pi by 2,
this is given, then which will be is true, that is x is equal to y, that is real part and imaginary part is equal, that is option B, that is argument of z. This is principal argument of z will be pi by 2. Option C is x is 0, means real part of z is equal to 0, and option D, that is imaginary part of z is 0 or y equal to 0. So this is solution will be here given z is equal to e to the power 2 plus I pi by 2. So this will be e to the power 2 into e to the power I pi by 2. So now this is e to the power 2 into e to the power I pi by 2. This will be cos pi by 2 plus I sin pi by 2. So now this is e to the power 2. So cos pi by 2 is 0, and plus I sin pi by 2, this is equal to 1. This sin 90 is 1. So this will be this 0 multiplied with this, so this will be 0 plus I into a square. So what will be, so here that is z, this is equal to z is equal to x plus iy. So we have x is equal to, hence we have this is equal to x plus iy, we write. So x is equal to 0 and y is equal to a square. So now what is that? So this is x equal to 0, that is real part is 0. So option C is right. So option C will be right. Now argument of z. So here imaginary part of z, that is y, not equal to 0. So this will be absurd, and x is equal to y. Here x and y are different, so this also will be wrong. Now for option B we have argument of z is equal to tan inverse y means e square by 0. So this is undefined, so tan inverse infinity. Here tan pi by 2 gives us the infinity, so this will be pi by 2. So hence argument of z will be pi by 2. So option C also right, and option B. So this will be the question. This is the question of part C. क्योंकि पार्ट सी में जो है वो एक से ज़्यादा आंसर होता है. सो एक और क्वेश्चन जो कि है इफ नो यहाँ पे एक वैल्यू पूछा गया है. सो द वैल्यू of root over 2i, and the option is option A 3 plus 4i, option B is 1 plus I, option C is 2 plus 2i, and option D is root 2 into I. So चलिए इसको सॉल्व करते हैं. So given z is equal to root 2 I. So now this can be written as 2i whole to the power half. Root over can be written as power to the power half, and now this is 2i. So this 2 into I can be written as 0 plus I into 1, this whole to the power half. So what is that? This will be 2 into 0 can be written as that is cos pi by 2. The value of cos pi by 2 is 0, and plus I into sin pi by 2. Sin pi by 2 value is 1. So this, so now 2 into this cos pi by 2 plus I sin pi by 2, it can be written as e to the power I pi by 2, and this will be to the power half.
So now into e to the power I pi by 2, this to the power half. So this root 2 into this will be product, so multiply this, so this will be e to the power I pi by 4, and this root 2 is e to the power I pi by 4 can be written as cos pi by 4 plus I sin pi by 4. This will be root 2 into cos pi by 4 means 1 by root 2 plus I sin pi by 4 is also 1 by root 2. So root 2 cancel, this will be 1 plus I. So which option will be correct? Here option will be correct is B. So this is the last question. So here given z is equal to 4 into e to the power I pi by 6, then which will be true? That is x equal to 2 by 3, y equal to 2, c that is x equal to 4 and d is y equal to 4. तो चलिए इसे हम सॉल्व करते हैं. शो सॉल्यूशन. दिस z is given by e to the power I pi by 6. So this can be written as, and we always know that z is equal to x plus iy. You never forget. So this is equal to 4 e to the power I pi by 6 can be written as cos pi by 6 plus I sin pi by 6. So here cos pi by 6, that is cos 30. Cos 30 is value, we know that this is root 3 by 2 plus I sin pi by 6 is, that is 1 by 2. So here this will be 2 root 3 plus I into 2. So the value of z gives this, and this we know that x plus iy. So comparing both sides, we have x is equal to 2 root 3 and y is equal to 2. So here option B is right. Common question is the find the principal value, find the principal value of I to the power I, जो कि हमने ये क्लास में कराया है. और that is value of root 3 plus I to the power 7. And so this also discussed in the first lecture. So go on the lecture. So go to this video and see the steps. Okay, so here we completed the first chapter, that is complex number system, and in the next video or in the next day हम लोग जो है पढ़ेंगे फंक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स वेरिएबल, लिमिट, continuity, differentiability, etc. So for today, thank you all.